Good evening, everybody. We will be talking about conjunctivitis because everybody around seems to have it. And in the next 30 or 40 minutes, the object of my discussing conjunctivitis with you is to, make you understand it better, feel less worried about it, and also how to safeguard yourself from it. And at the end, I'll leave some, time for questions which I may not have anticipated and put in my talk. So I'm just starting my slides. So first of all, what is conjunctivitis? The conjunctiva is the transparent covering in front of the surface of the eye. And if this is inflamed or infected, it's called conjunctivitis. We can't see it. If you see, your cell phones have that small transparent film on top, or we have that cling film we put on top of food items that we may have saved for some time. So it's very transparent, you can't see it. And it's on these various places. So it's on the white part of the eye. It's a fine film covering the white part of the eye. It lines the inner surface of the lids. Here it's lining the upper lid. Here it's lining the inner surface of the lower lid, right? So this is the conjunctiva. So your question will be, why are so many people getting this conjunctivitis in the first place nowadays? So there are various factors. Nothing has been proven for sure. Some have been proven and some are speculative. So it could be related to the agent. When the temperature and the humidity is right for certain bacteria and viruses. And in fact, the viruses which we are suspecting of causing these epidemics is adenovirus, which is the commonest one which causes these epidemics. And then there are some bacteria like staphylococcus, streptococcus, haemophilus, etc. So there are certain temperatures and humidities where they become their most active. That's why these conjunctivitis episodes tend to be seasonal. And of course, if the organism has a high infectivity and a short incubation period, then a lot of people get infected in a short amount of time. The environment also, it's very humid, and water around us helps to transmit, the disease. So that's why we're getting more of it now. It could also be related to us, how we keep our hygiene. And what happens is that in the rainy season, because there's rain outside, we tend to close our windows so the ventilation is less. It is speculated that because we can't go out so much, there being rain, there's a lack of sunlight with a concomitant lack in vitamin D. So our own immunity may be getting less. And some people have also said the sleep-wake cycle, the diurnal rhythm, light also plays a role in shaping our immunity. So all these factors could be causing this sudden increase, which has happened nowadays. Some people personally feel, I'm also one of the people, that when the COVID epidemic occurred, apart from the respiratory tract, the eye also had those receptors where COVID can attach. And we're just wondering that in some way, all of us went through COVID. Did the receptors get, changed in some way that made our eyes more susceptible? So this is speculative right now. And I'm sure after the epidemic is studied a little more and researched about, we'll have more answers. So this conjunctivitis which I spoke about, you can have an inflammation or infection. Normally, we use the word inflammation if it is due to factors, allergy, something may have gone inside the eyes, something which is not caused by an infective organism, then we use the word inflammation. And if it's caused by an organism such as bacteria, virus, etc., then we use the word infection. Now, this is just to give you an example that here this little person seems to, you see this ring around the black area. Here, let me show it with the pointer. You can see, so this is actually an allergic reaction, very typical. So this is not your infective conjunctivitis. Here and here, you can see the little ring which occurs around the black part, which is the cornea. So this is a typical allergic conjunctivitis. It's not the infective one we are seeing nowadays. You're seeing this also, but so what are the symptoms of an infective conjunctivitis? Some people will say, many of you would have suffered it or your families. So you may feel a gritty sensation as if someone has put a little sand in your eye. There may be watering. Some people may wake up in the morning and have stickiness. There may be some burning sensation. Jalan hoti hai, log kehte hain. Halki si khujli hoti hai. Then you may have, jab aap light mein jaate hain, thoda sa discomfort hota hai. You feel uncomfortable opening your eyes. So इस तरह की varied चीजें आपको हो सकती हैं.
What are the signs? The difference between symptoms and signs is symptoms होते हैं जो हम feel करते हैं और signs होता है जो प्रकट होते हैं. So when we look at a person who has this infection, हम देखते हैं कि eyes are red and the red can be varying. कभी-कभी लोगों की white भी होती है, बिल्कुल normal भी लग सकती है, what we call a subclinical infection. Some people can have moderate infection and some can have severe. I'm sure some of you are seeing, people with those blood spots in the eye, which look very scary. They are not that scary as they look, just to reassure you. Or you can have swelling of the conjunctiva, what we call chemosis. So normally you can't see the layer, but here, because there's a swelling, you can see where my arrow is getting better defined. You can make out that there's some film over the eye. Then you can have swelling and puffiness of the lids, as you can see in this photograph. You can have watering, there can be discharge. So people can present either patients जो हैं या तो सिर्फ eyes के symptoms को लेके आ सकते हैं, or they can be systemic illness as well. So there is a well-known entity called pharyngoconjunctival fever. उसमें क्या होता है कि fever होता है, आपका throat भी खराब होता है, and there are some lymph nodes in front of the ear, वो भी सूज सकते हैं at that area, and also along with that you can have conjunctivitis. So then इसका मतलब है conjunctivitis is part of a syndrome. Or you can have just standalone conjunctivitis. Your body is absolutely fine, but only your eyes are affected. So you can have standalone conjunctivitis. And जो herpes वाले conjunctivitis होते, they usually always have skin infection accompanying. So here you can see someone has those typical herpes zoster lesions on the forehead. ये बड़े-बड़े blisters होते हैं, इसके साथ conjunctivitis होता है. You can have herpes simplex also. उसमें छोटे-छोटे blisters होते हैं, tiny blister, and along that conjunctivitis. So the broad aim is to tell you that sometimes वो standalone होता है, and sometimes it can be accompanied by fever and other systemic symptoms. Now, an important question, that should you worry about this conjunctivitis? So in a very large number of cases, no. You just have to be patient. You have to put the drops, which the doctors will, I'll be coming to the treatment in a little few slides later. So you have to do what the doctor tells you, and it is self-limiting. Viral जो illnesses होती हैं, वो self-limiting होती हैं. Bacteria में थोड़ा सा antibiotic help देना होता है. And in most cases, very high proportion of cases, आपको uncomfortable feeling होती है, आपका काम रुक जाता है, आप इधर-उधर जा नहीं सकते. So all this irritation thing is there, but it is not, usually it goes, the incident passes without any problem in most people, over 90% people, so you shouldn't worry. It is important for you to know कि bacterial या mild viral है वो 4-5 days में clear हो जाएगा. जो थोड़ा सा moderately severe viral conjunctivitis है, it takes 1 to 3 weeks to clear fully. When I say it takes 1 to 3 weeks, जब आप दवाइयाँ शुरू करेंगे, you will feel much better in 4-5 days. Much bearable हो जाएगा. But पूरी लाली जाने में या वो hemorrhages जाने में up till 3 weeks लग सकते हैं. And you have to be a little responsible कि दूसरों को नहीं हो. So I'll be coming to all those precautions later. When should you worry? When it does not seem to resolve. अगर चलता ही चला जा रहा है, मैंने ऐसे चलता चला जा रहा है, जैसे कि मैंने कहा था कि वायरल में 1 से 3 हफ्ते तो लगेंगे ही लगेंगे जाने में, यूजुअली जो मॉडरेटली सिवियर है. बट अगर आपको 10 दिन बाद जरा सा भी रिलीफ नहीं मिल रहा है, रेडनेस भले ही रहे, तो देन you should go back to your doctor and say क्यों नहीं हो रहा है. Then they'll search for something else कि कोई और चीज accompanying साथ में तो नहीं है. If your vision gets affected, that's something you should immediately go to your doctor about, because sometimes apart from the conjunctiva, even the cornea gets affected. उसमें थोड़े-थोड़े वो हो जाते हैं, SPKs हो जाते हैं या subepithelial infiltrates. I'll be describing them later. Then if your photophobia is very severe, meaning normally light में अच्छा नहीं लगता है, but अगर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं light में जाके दर्द हो रहा है, something very dramatic like that, then just something to be concerned, you go to your doctor. जो छोटे बच्चे हैं उनके बारे में you have to be very careful, because sometimes जो नवजात शिशु होते हैं और उनकी आंख में बहुत सारा discharge आता है, तो there are some conditions like gonococcal conjunctivitis, Neisseria gonorrhea वगैरह, तो ये कभी-कभी meningitis वगैरह के साथ भी associate हो सकते हैं.
तो इनका बिल्कुल इमीडिएट ट्रीटमेंट होना होता है। इस आंखों के इलाज के साथ साथ वी हैव टू गिव देम सिस्टमिक ट्रीटमेंट आल्सो, इंजेक्शंस देने होते हैं। So in such cases you have to be very prompt about taking it immediately to the doctor. Don't say कि सबको हो रहा है इसको भी ठीक हो जाएगा। And I mean आपको पता चल जाएगा, अगर disproportionate signs का मतलब हुआ कि आपको पता चल जाएगा कि मेरा थोड़ा सा अलग है conjunctivitis, तो ऐसे जरा सा भी संदेह हो, please go immediately to the doctor. But ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, ज्यादातर it will pass without too much problem. Complications are there but they are rare. What are the sort of complications we can get? कभी कभी जो हमारा कॉर्निया होता है, the black part of the eye, तो उसमें जो होता है वायरस पार्टिकल्स उसमें भी इन्फिल्ट्रेट करने लगते हैं. So we can get little white spots just under the epithelium, or we can get dry areas. कभी कभी अल्सर भी बन जाता है. So all these are treatable. So this is a problem. They have to be treated a little differently, but doctors treat them. And these spots may remain lifelong on the cornea, but usually एक या दो लाइन से ज्यादा विजन कम नहीं होता है. You can get corneal ulcers. अगर बाकायदा अल्सर हो जाए, again we have good treatment for that. There are excellent treatments available and all. Only problem is उसकी जो scarring होती है उसमें vision काफी impact हो सकता है. But there are few people who get this, not it's a small subset of people. Then we can have membrane formation. Membrane is like a film, थोड़ा sticky type ऐसे एक परत सी बन सकती है in the या तो ऊपर या नीचे कंजंक्टिवा में. नॉर्मली वो व्हाइट एरिया में नहीं बनती, वो जो फॉर्निसेस हैं, जो कॉर्नर्स हैं उसमें बनती है. एंड ये दो तरह की होती है, सूडो मेम्ब्रेन एंड ट्रू मेम्ब्रेन. सूडो मेम्ब्रेन होता है वो एक इट्स जस्ट अ कलेक्शन ऑफ डिस्चार्ज, वहां थोड़ा सा एक उसने परत बना ली, वो आसानी से हट जाता है. एंड ट्रू मेम्ब्रेन होता है वो जब ब्लड वेसल्स ग्रो करके काइंड ऑफ फाइब्रोवास्कुलर टिश्यू बनाते हैं, तो ये मेम्ब्रेन को हम हटाते हैं तो थोड़ा ब्लीडिंग हो सकता है, वो एरिया रॉ हो सकता है, उसमें लिड के दो हिस्से एक दूसरे से चिपक सकते हैं, तो वो थोड़ा सा ट्रबलसम हो सकता है. जैसे कि मैंने बताया कि जो न्यूबॉर्न्स में बहुत सिवियर टाइप का हो जाए उसमें कॉर्निया मेल्ट भी कर सकती है, बट ये रेयर केसेस होते हैं. बट जस्ट आपको बताने के लिए है कि कोई अनयूजुअल चीज हो तो डॉक्टर के पास पहुंच जाइए, सो दैट दे कैन ट्रीट यू इन टाइम एंड ये सब नहीं हो. एंड ये तो ऑब्वियस बात है कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है वो ज्यादा वल्नरेबल होंगे. और व्हाट डू वी मीन बाय इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज? जिनकी इम्यूनिटी लो है, जिनको कोई और डिजीज चल रही है, HIV कैंसर वगैरह, जिनका कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज पे हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, बहुत छोटे हैं, तो वो तो समटाइम्स इट्स इंट्यूटिव कॉमन सेंस कि इन लोगों को थोड़ा ज्यादा यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट देम. नाउ दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हाट प्रिकॉशंस यू कैन टेक. हम लोग तो चाह रहे हैं कि किसी को नहीं हो, तो ये यू कैन सी किसी बच्चे ने ये बहुत अच्छी आउल बनाई है. तो दिस लिटिल आउल इज टेलिंग अस सर्टेन वाइज थिंग्स वी कैन डू कि ये कम फैले. तो ये कैसे ट्रांसमिट होता है? जब जो हमारा आंख का फ्लूइड है वो इन्फेक्टिव होता है. सो वी हैव टू मेक श्योर कि हम आईज को नहीं टच करें, स्पेशली समबडी हु हैज कंजंक्टिवाइटिस. एंड फिर उसके बाद हम नीचे किसी चीज पे नहीं लगाएं, नहीं तो आंख की फ्लूइड से वो दूसरे आइटम पे गया, उसको फोमाइट कहते हैं. फिर दूसरे का हाथ उधर लगा तो उनके हाथ पे आ गया, फिर उन्होंने अपनी आंख को खुजलाया, तो ऐसे आंख के पानी से जाता है. सो टू मेक श्योर कि वो पानी नहीं जाए दूसरों को, हम बार बार हाथ धो सकते हैं, हम अपनी आईज को नहीं टच करें. एंड इफ वी वेयर ग्लासेस, अगर हम बिना नंबर के ऐसे कोई ग्लासेस पहन लें तो अगर अनजाने में हमारा हाथ जा भी रहा है आंख के पास तो वो रुक जाएगा, हमें याद आ जाएगा. वी शुड कीप ऑल आवर पर्सनल आइटम्स सेपरेट. जैसे हमें शेयर नहीं करना चाहिए टॉवल, हैंकी, पिलो एक्सेट्रा, नहीं तो दूसरे को भी हो जाएगा. एंड वो जो सिक्रीशंस हैं वो हमें बड़े इरिटेट करते हैं. तो मैंने देखा है कई लोग अपने हैंकीज रखते हैं, जेब में निकालते हैं, बार बार पोंछते हैं. सो दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू, बिकॉज उसमें ऑटो इनोक्यूलेशन होता है. वो सारा जो इन्फेक्टेड मटेरियल आपके हैंकी में जा रहा है अच्छी तरह वहां पे सिक्योरली बना हुआ है, और वही हैंकी आप वापस आंख में ले जा रहे हैं, तो बार बार ऑटो इनोक्यूलेशन होता है. सो इससे फार बेटर है कि आप डिस्पोजेबल टिश्यूज लीजिए और आंख को जोर से नहीं मल लिए, जस्ट जेंटली वो करके फिर फेंकिए टिश्यू, फिर दूसरा टिश्यू लीजिए, फेंकिए, जितनी बार करना हो. इसके बारे में कोई कंजूसी नहीं करिए, जितने 1000 भी यूज करने हो, बट कीप थ्रोइंग देम इन सम सेपरेट कंटेनर, क्लोज कंटेनर, बीच बीच में उसमें स्टेरिलियम भी गिराते रहो इस कंटेनर में.
दूसरा ऑप्शन है, अगर टिश्यूज नहीं यूज करना चाहते तो आप कॉटन को बॉईल करके यूज कर सकते हैं। एंड जो जब बॉईल होने लगती है कॉटन, you can bring it to a rolling boil. That means कि once it starts boiling, let it continue boiling for about 5 to 10 minutes. Then you cool it, and that clean cotton, fairly sterile also, you can keep, wiping your eyes, but don't use that same cotton again. You have to keep throwing it. And if many people in the family have conjunctivitis, then keep your eye drops separate. The reason being that no matter how careful we are, हमने ऐसे छुआ और फिर आई ड्रॉप को रखा तो हो सकता है कि वो पर्टिकुलर बॉटल कंटेमिनेट हो जाए. So best for different people to keep different eye drops. Only in, especially in this. बाकी चीजों में शेयर कर लें, but not during an epidemic. So ये सब करने से जो एक दूसरे का से ट्रांसमिशन है वो काफी कम हो जाएगा. मोस्ट इम्पॉर्टेंट बीइंग कि अगर आप दिन में 4 बजे 4 दफे हाथ धोते हैं तो एटलीस्ट 10, 12, 15 दफे धोइए. दैट्स योर बेस्ट सेफगार्ड. So what is the treatment? So most जो वायरल होते हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, मीनिंग अपने आप अपना कोर्स करके एंड दब जाते हैं. लेकिन जब वो जिस टाइम वो होता है, while we are undergoing it, वो बड़ा अनकंफर्टेबल होता है. ये सारे जो मैंने सिम्टम्स आपने देखे थे, ग्रिटी सेंसेशन, ऐसे कोई कुछ गया है आंख में और तो बहुत अनकंफर्टेबल इंसान रहता है. And to make sure that the person is comfortable while the body is healing the thing, we like to give a lot of supporting treatment. So सबसे commonly हम देते हैं lubricating drops, और इनका ये preservative free होती हैं, डालने में बहुत safe होती हैं, कई बार डाल सकते हैं. And इनका काम होता है, they decrease the burning. And हम क्योंकि बार बार wash out करते हैं कीटाणु को, तो amount of virus bacteria थोड़ा कम हो जाता है, तो थोड़ा faster resolution हो जाता है. अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और यूजुअली हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन तब सस्पेक्ट करते हैं जब वो कीचड़ टाइप आता है. वायरल में नॉर्मली वाटरी डिस्चार्ज आता है, देयर बी अ लॉट ऑफ वाटर एंड ऑल दैट, बट नॉट सो मच, यानी होता नहीं है डिस्चार्ज. और बैक्टीरिया में वो थिक, आप सुबह उठेंगे और आपकी लैशेस बिल्कुल चिपकी होंगी, कभी कभी खुलती नहीं, तो इतना सारा कीचड़ होता है. सो दैट्स लाइकली बैक्टीरिया. सो अगर हमें लगता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या बहुत ज्यादा सिवियर इन्फेक्शन है, देन वील गिव अ antibiotic along with it. Then sometimes we give steroids if we feel कि जैसे कॉर्निया में मैंने बताया था, कभी कभी वो थोड़ा सा स्कारिंग हो जाता है. अगर वो बीच में है जहां से हम देखते हैं, अगर हम वो स्कार्स को हटाने की कोशिश ना करें तो फिर लाइफ लॉन्ग वो निगाह में थोड़े थोड़े पार्टिकल ऐसे ब्लैक स्पॉट्स रहेंगे. सो अंडर सर्टेन कंडीशंस, या अगर वो जो मेम्ब्रेन्स बन रहे हैं जिनका मैंने जिक्र किया था, सो देयर आर सर्टेन कंडीशंस. या फिर अगर बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, इंसान कंफर्टेबल नहीं हो रहा, तो कुछ इंडिकेशंस होते हैं जिसमें डॉक्टर स्टेरॉइड ऐड करते हैं. अपने आप से कभी मेडिकेट नहीं करना चाहिए, बिकॉज यूजुअली ये वायरस जो होता है ये पहले 2-3 दिन थोड़ा बढ़ता है, फिर घटता है. तो डॉक्टर्स को पता होता है कि किस समय स्टेरॉइड दे सकते हैं, कितनी मात्रा में दे सकते हैं, कैसे सेफली दें. अगर आप अपने आप केमिस्ट से यू टेक स्टेरॉइड्स, देन दे हैव साइड इफेक्ट्स, लाइक एकदम फ्लेयर अप हो सकता है, देन can have increased pressure, various things, cataracts can happen if you take them for a long time. So it's not safe to medicate yourself. Then we give ointments at night. Ointments का खास रोल होता है कि they help faster resolution, because जब हम रात को सो रहे होते हैं, we don't keep getting up to put drops. एक दफे हम सो गए, उस टाइम अगर हम थोड़ा मलहम आँख के अंदर लगा के सो जाए तो फिर रात को भी कुछ अच्छा काम होता है. एंड कुछ बच्चे होते हैं, अब आप सोचिए कि एक छोटे बच्चे को पकड़ के आप कई बार ड्रॉप्स डालो तो वो जरूर मना करेगा, छोटा बच्चा थोड़ा सा मनमानी करेगा. सो इन सच कंडीशंस इट मे बी इजियर फॉर द पेरेंट्स टू पुट एन ऑइंटमेंट, कि फिर वो दैट पर्टिकुलर मेडिसिन विल बी इन कॉन्टैक्ट विद द आई फॉर अ लॉन्ग टाइम. अपार्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल मेडिसिन, आजकल न्यू ट्रीटमेंट्स आर बीइंग एक्सप्लोर्ड, लाइक बीटाडीन एंड स्टेरॉइड्स एंड ऑल दैट. Betadine is not something patients can put themselves in the eye, because वो बहुत strong होता है and all that, but ये experimental उसमें है, और हो सकता है कि ऐसी drops बन जाए. Then supportive treatment हम देते हैं, जैसे cold compresses, ice within a cloth we can put some ice and put it many times on the lids, especially जिनकी lids बहुत सूजी है, आँख खुल नहीं रही, those people benefit a lot. या जिनको बहुत severe burning हो रही है,
So when they put ice on their eyes a couple of times a day, they feel very nice. You know, body is in any case fighting the infection, but meanwhile they're feeling very nice also. Just एक बात याद रखिएगा, don't keep the ice in contact for a very long time. 20-30 seconds से ज़्यादा नहीं रखिए, because आप देर तक रखेंगे ना तो फिर कंफर्ट की जगह दर्द होने लगता है. बहुत ठंडा आइस अगर आप आंख पे ऐसे रखेंगे 1-2 मिनट तो देन फिर पेन शुरू हो जाता है. तो इतनी देर मत रखिएगा, just for a little while. And apart from all this, we normally give vitamins कि आपकी immunity बढ़े. And like I said कि अगर ये conjunctivitis कोई body के infection का हिस्सा है तो फिर हम उसको भी ट्रीट करते हैं. खांसी फीवर वगैरह को हम साथ में ट्रीट करते हैं. सो मीनिंग काफी नुआंस्ड है. एंड एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल एक चीज होती है माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. अगर डॉक्टर्स आपको स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स लिख दें हर एक इंसान को, तो जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं. फिर कल को कोई प्रॉब्लम होगा, आंख में इन्फेक्शन होगा, ऐसे एपिडेमिक होगा, तो हमारे नॉर्मल वाले जो एंटीबायोटिक्स हैं वो नहीं काम करेंगे, स्ट्रॉन्ग वाले भी. सो डॉक्टर्स को ये सब भी देखना होता है एट अ मैक्रो लेवल कि बहुत थोक में एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक नहीं यूज करें, राइट. कि हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग होती है एज ए कम्युनिटी कि माइक्रोबियल रेजिस्टेंस नहीं डेवलप करे. भले ही किसी का 2 के बजाय 4 दिन ले ले ठीक होने में, कोई ऐसी बात नहीं है. आई मीन सर्टेन जहाँ पे देना है उसमें तो हम पीछे नहीं हटते, बट ओवरऑल एज ए कम्युनिटी ये माइक्रोबियल रेजिस्टेंस नहीं पैदा होना चाहिए. नाउ कमिंग टू जो आपके सवाल होते हैं नॉर्मली हम लोगों से कि जब कंजंक्टिवाइटिस है क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं. सो डेफिनेटली ऑफिस वगैरह मत जाइएगा, बिकॉज लाइक आई एक्सप्लेन कि जरूर स्प्रेड हो सकता है. आपकी हाथ आंख की तरफ गई, देन यू टच द फाइल, someone else picks up the file and all that, So best to avoid. You can work from home. Can you see the computer? Yes, of course you can, if you're not uncomfortable. Meaning कोई contraindication नहीं है, आप जरूर काम कर सकते हैं, कोई जरूरी काम है या कुछ. But definitely अगर आप eyes को rest करेंगे, you will feel better, है ना. And you'll remember, अगर आप busy हो गए किसी assignment में, तो जो आपको बोला गया है कि 6-7 बार या 10 बार drops डालिए, वो आप भूल जाएंगे. इस तरह की चीजें हैं. So if you take it a little easy, it's going to resolve much faster. पर ऐसे कोई मना ही नहीं है कि आप स्क्रीन नहीं देख सकते. Then अपने जो पर्सनल आइटम्स हैं, मैंने पहले भी आपको गाइड किया था कि बाकी लोगों के साथ शेयर नहीं करें. तो अपना टॉवल वगैरह, हैंकी, इवन योर पिलो, दैट बिल्कुल अलग रखिए. हाथ बार बार धोते रहिए, जस्ट कि वो सबसे सेफ चीज है. जितनी बार आप हाथ धोएंगे, देन आपको रिस्पॉन्सिबल होना है. अगर आपके चाइल्ड को है कंजंक्टिवाइटिस तो आप बिल्कुल स्कूल मत भेजिए, नहीं तो फ्रेंड्स को हो जाएगा. बल्कि बड़े लोग फिर भी थोड़ा सा दे कैन लुक आफ्टर देमसेल्व्स. चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू, तो दे आर इनफैक्ट चिल्ड्रन से सबसे ज्यादा स्प्रेड होता है, बिकॉज उनको इतना आइडिया नहीं होता है क्या करना है क्या नहीं. एंड मैंने देखा है टीचर्स आर वेरी सेंसिबल, वो खुद ही वापस भेज देते हैं बच्चों को. बट आप अपनी तरफ से भी ध्यान रखें, बिकॉज आप बच्चे को भेजेंगे, टीचर को पता चलेगा, वापस भेजेंगी मैं, तब तक हो सकता है बच्चे ने कुछ चीजें छू ली हों. देन अगर आप जैसे यू आर इन चार्ज ऑफ सम प्रोफेशनल सच एज कार्पेंटर्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, इनको दूसरों के घर में मत भेजिए if they have conjunctivitis, नहीं तो they will touch people's surfaces and all that. Then personal habits में swimming avoid करें, because water में फिर transmit होगा, दूसरे लोगों को भी pull हो जाएगा. Then eye makeup आप avoid कर सकते हैं. Contact lenses बहुत unsafe होते हैं. अगर आप कंजंक्टिवाइटिस के दौरान, जब आपको कंजंक्टिवाइटिस है उसके दौरान आपने कॉन्टैक्ट लेंस पहना, तो यू कैन गेट अ कॉर्नियल अल्सर एंड हैव अ सीरियस इन्फेक्शन. एंड डोंट सेल्फ मेडिकेट. So there are a lot of myths about conjunctivitis, not so many also, but one very common question people ask is that कि अगर हमने किसी दूसरे को देख लिया तो हमें कंजंक्टिवाइटिस हो जाएगा. No, that is not true. ऐसे नहीं होता. जैसे बताया, वो आँख के पानी से होता है, when it touches somebody, and वो फिर उनकी आँख में जाता है. Then कुछ लोग सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं आँख में, मिल्क, हनी, रोज वाटर एंड ऑल दैट. That's not a good idea.
बिकॉज आजकल आपको पता है ये रोज वाटर तो बहुत कॉमन है, हर चीज के लिए लोग रोज वाटर डालते हैं एंड काफी प्रॉब्लम्स हैं इसके साथ, बिकॉज एक्चुअली इसका जो पीएच होता है और टीयर्स का पीएच फर्क होता है। बल्कि हम डिस्करेज करते हैं कि अपनी आंखों के अंदर पानी भी नहीं डालिए, आरओ पानी भी नहीं डालिए। क्यों? क्योंकि उसका कॉम्पोजिशन, उसका पीएच वगैरह आंसू से डिफरेंट होता है। और रोज वाटर तो बिल्कुल ही अलग हो गया, एक फॉरेन चीज हो गई। इट्स लाइक सम डिफरेंट थिंग कमिंग इन, सो इट कैन कॉज मोर इन्फ्लेमेशन एंड वो पिक्चर को कंफ्यूज कर सकता है। और दूसरी बात है कि आजकल चीजों में बहुत ज्यादा मिलावट है। जो आप सोच रहे हैं रोज वाटर, वो क्या वाटर है भगवान ही जानता है। सो इट्स वेरी अनसेफ टू ट्राई टू पुट थिंग्स लाइक दिस। एटलीस्ट ड्रग्स का ये है कि बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्डाइजेशन है, इंस्पेक्शंस है, फार्मास्यूटिकल्स में बहुत वो चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। तो एटलीस्ट सब मेडिसिन, ल्यूब्रिकेटिंग ड्रॉप्स डाल रहे हैं, आपको पता है कि स्टैंडर्डाइज्ड है, बट ये सब चीजें मत डालिए। मिल्क एंड हनी का कोई ऐसा प्रूवन वो रोल नहीं है, सो वी कैन कमेंट ऑन इट। एंड आपको अपने कम्युनिटी में भी मिथ्स पता होंगे which I don't know about, but if you follow the conventional treatment which we suggest and all that, then I think you should be quite fine. So to summarize, there's really nothing to worry. आप ऐसे फिकर नहीं करिए, because like I said, more than 90% people will get absolutely fine. If there is something unusual, please go and see a doctor. They have a lot of medicines, a lot of experience, they can sort it out for you. And most importantly, keep yourself safe, कि आपको फालतू में carelessness की वजह से नहीं हो जाए, and keep others safe. अगर आपको हो गया, just आप ध्यान रखिए कि दूसरों के साथ नहीं शेयर करें. So thank you so much. And if you have any questions, you can type them and I'll take them. I'll try to answer them. You can type them in the chat box. Pushpa Malesh is saying that, hi ma'am, I'm working on a system. Frequently I'm getting my eyes itching and redness. So typically itching hota hai Pushpa, that's more a sign of allergy. So you can come and show it, but ऐसा नहीं लग रहा कि आपका वो होगा. And this is well taken care of by, we have anti-allergics, we have lubricating drops. आसानी से आपको आराम आ जाएगा. This is more of allergy type. Yeah, so Mariam, आपने लिखा है, you have a little bit of itching in your left eye early morning for 4 days, and it gets swollen and puffy. Kindly advise. So I'll have to ask you more questions. Ki, are you having pain? इसमें discharge आ रहा है कि नहीं? So I'll need a little more information. So what I'm going to do is I'm actually going to share my number with you, and you can message me or talk to me, and without knowing some more details, I cannot advise medication for you. Rajan says, ma'am, does prescribed eye drops help in releasing pain too? Yes, absolutely. जो हम lubricating drops देते हैं ना, people come with severe burning and that gritty sensation कि आंख में मट्टी चली गई है. When you take these lubricating drops, and हम लोग क्या suggest करते हैं कि इनको fridge में रखिए. So that combination of a chilled lubricating drop, 1-2 दिन में इतना comfortable feel होता है. Yes, it certainly does help in releasing pain. If for some reason pain is not going by drops and all, then we prescribe simple tablets like a paracetamol tablet, more severe pain combiflam tablet you can take. But usually with drops you feel very nice. So Ankita says that you got a sty in your right eye last week, and when you recovered, it got it in the left eye. No, sty is different from conjunctivitis. Sty is a swelling of the lids. It's like getting a pimple on the skin. You got a pimple on the eyelid. Why you're getting it again, maybe you're rubbing your eyes. That's the commonest cause. When we rub eyes, हमें लगता है कि हमारे हाथ बहुत साफ हैं and all that, but they usually have some dirt on them. So 90% of the time when somebody is rubbing their eyes, then you have to figure out why are you rubbing your eyes. वो क्या बार-बार itch कर रही हैं, आपको बार-बार eyes tired होती है, थकावट होती है, क्या वजह है कि बार-बार आप आंखों को हाथ के पास ले जा रहे हैं. If you don't touch your eyes, you won't get a sty. Sometimes people who have diabetes or a family history of diabetes, they start getting these styes
very often, but most often it's just a lot of dirt on the hands. That's an interesting question. What are the odds of सवाल है कि अगर किसी को आई फ्लू हुआ उसके बाद क्या आंख का पावर बढ़ता है? So no, not directly because of the eye flu, unless you had a complication. अगर आपके कॉर्निया में कुछ स्कारिंग हुआ है तो उसकी वजह से कॉर्निया का शेप थोड़ा सा चेंज हो सकता है एंड उसकी वजह से एस्टिग्मेटिज्म सिलिंड्रिकल नंबर आ सकता है. But since most people are not having these complications, corneal complications, सिर्फ कंजंक्टिवा पे है, so it is not because of the conjunctivitis. मान लीजिए कंजंक्टिवाइटिस नहीं है तो किसी को माइनस नंबर शुरू होता है तो यूजुअली यंग एज से जब भी होता है, किसी को बचपन से होता है, मोस्ट पीपल को स्कूल गोइंग एज से होता है. सो ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम 1 or 2 decades, जब तक हम अर्ली 20s में पहुंचते हैं, there's a tendency for the number to increase. That's the natural history of the number. Most people में धीरे धीरे इंक्रीज होता है, कईयों में रुक भी जाता है. आजकल कुछ साधन है हमारे पास, ड्रॉप्स वगैरह हैं जो पहले नहीं थे कि नंबर तेजी से नहीं बढ़े, तो हर एक का, बट द टेंडेंसी इज टू इंक्रीज अ लिटिल बिट. तो दैट्स अ प्योर कोइंसिडेंस कि वो बढ़ रहा था, साथ में कंजंक्टिवाइटिस हो गया. तो वैसे नहीं इंक्रीज होता कंजंक्टिवाइटिस की वजह से. राजन, आपका क्वेश्चन है कि डज इट रियली हेल्प टू क्लीन द आईज विद ल्यूकवार्म वाटर? सो मैंने जैसे आपको बताया था कि भगवान ने जो टीयर्स बनाए हैं उनका जो पीएच है और कॉम्पोजिशन है वो यूनिक है, तो दूसरी चीज मैच नहीं कर सकती है, राइट? जब हम ऑपरेशंस करते हैं तब हम कुछ स्पेशल फ्लूइड्स यूज करते हैं जो बिल्कुल मैच करते हैं, बट दोज आर ओनली अवेलेबल इन हॉस्पिटल्स एंड ऑल, एंड दे ओनली फॉर सर्जरीज. तो बाय एंड लार्ज यू डोंट नीड टू पुट एनीथिंग इन योर आई, बट यस, जो आपके सिक्रीशंस आ रहे हैं, जो बार बार कीचड़ आ रही है ना, उसको क्लीन करने के लिए बाहर से certainly you can use boiled and cooled water. That's a good idea. So Naveen, I'm happy that you've recovered from your eye flu. I hope it wasn't very severe for you. And what I normally prescribe for people जो recover कर रहे हैं, because हमारा after all conjunctiva को थोड़ा बहुत ठेस पहुंचा होगा, so I like to advise people to take lubricating drops for 2-3 weeks afterwards. That helps. And I usually give them some vitamins which are specific to the eye. And जहां तक प्रिकॉशंस का सवाल है, वो तो सारे वो बताए थे कि फ्रीक्वेंटली हाथ धोना, दूसरे लोग जिनको कंजंक्टिवाइटिस है उनके आइटम्स को नहीं छूना, थोड़ा सा अपने केयरफुल एंड अवेयर रहना, प्रोटेक्टेड रहना. समटाइम्स इन स्पाइट ऑफ आवर बेस्ट एफर्ट्स हम नहीं बचते, बट यूजुअली इफ यू आर केयरफुल देयर इज अ हाई चांस, यू नो, बिकॉज यू सी डॉक्टर्स, ऑल ऑफ अस, हम लोग कितने पेशेंट सुबह से शाम तक देखते रहते हैं, बट मेनी ऑफ अस रिमेन प्रोटेक्टेड. जरूरी नहीं कि हर एक डॉक्टर को हो जाता है, हालांकि हम पूरे टाइम कांटेक्ट में आ रहे हैं तो थोड़ा तो हमारा इम्यूनिटी बिल्ड अप हो जाता है, लो ग्रेड, यू नो, कुछ कुछ जाता रहता है. बट बिकॉज वी आर ऑल्सो वेरी केयरफुल, आप देखेंगे आफ्टर एवरी पेशेंट हम लोग हाथ धोते हैं, सैनिटाइज करते हैं, बिकॉज हमें बहुत फिक्र होती है कि हमारी वजह से एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट को नहीं जाए. तो हॉस्पिटल्स में भी सुपर केयरफुल, हर चीज को साफ कर रहे हैं, सैनिटाइजर से हाथ को साफ कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, दिस दैट. सो इफ यू आर वेरी केयरफुल, द चांसेस आर दैट यू वोंट गेट इट अगेन. विपुल जी पूछ रहे हैं, हाउ कैन we protect ourselves from seeing the infected person if we go outside? No, you can't protect yourself. You wear glasses. वो तो if you go out, you may see someone who has it, but देखने से तो नहीं होता है conjunctivitis. So you don't have to worry. You can keep a distance. हाँ, so ये आपका अच्छा सवाल है. Any tested and trusted eye drops for toddlers to prevent the eye number? Yes. If you are talking about myopia जो होता है, जिसमें माइनस नंबर जो इंक्रीज हो रहा होता है, तो yes, we have eye drops. तो एक तत्व होता है एट्रोपिन. तो उसका जो एडल्ट का एट्रोपिन होता है 1%, उसका 100 times डाइल्यूशन होता है 0.01% एट्रोपिन. तो वो हम बच्चों को देते हैं, बट दे आर स्पेसिफिक एज रेंज, अबाउट 6 to 12 to 15 years. मीनिंग एक एज होती है जिस टाइम देते हैं, एक स्पेसिफिक तरीका है जिस तरीके से हम देते हैं. सो यस, योर डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब इट फॉर यू, एंड यस, इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड and helps in many cases to prevent a fast increase of number. And it's widely and freely available, and it's not expensive, but it has to be prescribed by a doctor only.
Yeah, absolutely, Vicky. If the delivery boy has eye flu, there's a very strong chance that many people can get it. वो तो है ही. एक बहुत पुरानी फेमस कहानी है टाइफाइड मेरी. एक नर्स थी जो बहुत लोगों के घर में जाती थी और सबके जहाँ भी जाती थी उसको टाइफाइड हो जाता था. उसका नाम ही टाइफाइड मेरी पड़ गया था. हिस्टोरिकल. सो पूनम, दैट्स अ नाइस क्वेश्चन. आपने पूछा है कि आई फ्लू फीवर कॉज कर सकता है और कितने दिन ये रहता है. दैट्स अ लवली क्वेश्चन. आई थिंक इट्स द अदर वे राउंड. ये जो फेरिंगो कंजंक्टिवल फीवर होता है जैसे एडिनो वायरस जो कॉज करता है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉन्स्टिलेशन ऑफ सिम्टम्स होता है जिसमें फीवर भी हो गया, कंजंक्टिवाइटिस भी हो गया. दूसरा नहीं होता है. यूजली इफ यू हैव आई फ्लू उसकी वजह से फीवर नहीं होगा. बट अगर आपको ऐसी बीमारी है जिसमें कंजंक्टिवाइटिस भी उसका हिस्सा है, एंड देयर आर मेनी सच थिंग्स, जैसे हर्पीज इन्फेक्शंस होते हैं, ये हर्पीज जोस्टर हो गया, हर्पीज सिम्प्लेक्स. मीजल्स होता है जो वायरल इन्फेक्शन जो बच्चों में होता है जिसमें बॉडी में सारे वो मीजल्स हो जाते हैं, उसमें भी कंजंक्टिवाइटिस होता है. तो देयर आर मेनी बॉडी के वायरल डिजीजेस में जिसमें कंजंक्टिवाइटिस उसका एक हिस्सा है. बट जस्ट कंजंक्टिवाइटिस होने से क्या आपको बुखार होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है. बाय चांस सेम वायरस इज कॉजिंग एवरीथिंग, तब होगा. एंड हाउ लॉन्ग डज द फीवर लास्ट? couple of days. Some people it gets okay in 2 days, 3 to 5 days. Vary karta hai. On an average, I'd say 1 to 5 days. How long can conjunctivitis stay for generally? बहुत अच्छा सवाल है. तो अगर बैक्टीरियल होता है या बहुत माइल्ड वायरल होता है तो 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है. लेकिन अगर मॉडरेट या सिवियर वायरल टाइप होता है, और हमें कैसे पता होता है कि वायरल है? You will have a watery secretion. Typically, you will not have that discharge. It will be more of water. And sometimes you can have a preauricular, you can have fever and all that. And you have those very red eyes sometimes, those hemorrhages. So the viral ones take 1 to 3 weeks to go away completely. And when I say go away completely, आराम आपको जल्दी हो जाता है. ये जो सारे symptomatic treatment मैंने describe किया था, इससे you start feeling much better. आपको आपके comfort zone में आ जाता है. बट पूरी तरह लाली जाने में, कंजंक्टिवा को रिकवर करने में takes about 1 to 3 weeks. But symptoms subside soon with medicines. No, I don't think you develop immunity because as you've seen with COVID, we used to think, अरे वाह, हमें injections लग गए, अब तो we are not secure. Because these little organisms, they are very clever. They keep mutating, they keep changing themselves. So, har saal strains new hote hain. Especially viruses, like every year you have a different strain of influenza. So like that you have different strains. So you can't say, if the exact same strain comes again, yes, your body would have immunity. But it's very rare for such a thing to happen because viruses are going on mutating, environmental conditions are going on changing. So, unfortunately, it doesn't give us immunity next time. Is home medical treatment advised for eye flu? That's a very nuanced question. And actually, मैं क्या बोलूं, because I find that doctors are the third level of engagement. So people have been on a large scale treating themselves. Then second thing is, if they are not successful, they go to a chemist. If the chemist is also not successful, then they come to a doctor. I feel it should be the other way around, unless you have, like, let's say somebody in the family is getting treatment from a doctor, and a doctor has said, don't worry, this is a mild conjunctivitis, ठीक हो जाएगा. And फिर family के दूसरे सदस्य को भी हल्का सा हो गया है. So in these conditions, common sense, it's okay. You can, take a chance and not go. But it's always better to take a doctor's advice, I feel. In serious cases, you should. Yeah, you can take my number from the organization. The organizers of the show will, give it to you at any stage if you write to them. All right. Thank you so much. It was a pleasure being with all of you. And even later, if you have some queries, you have some doubts, you're most welcome to contact Secure Now, and they'll, send your queries to me, and I'll be very
happy to answer them on a long-term basis, in the next month, 2 months also, if you have something you think of later. And I sincerely hope that what I said has helped you in some way to feel less afraid of this conjunctivitis epidemic and a little better equipped to protect yourself. Stay safe. I hope that all of your eyes remain well and that you stay safe. Thank you for being here.